So mate kuha the roles and responsibilities of the prime minister jodi am kahiba. Okay, and eta parikha tamara padithila. What is the roles and responsibilities of prime minister? Gote kuha in respect to council of minister Anupama kuha kon tanka roles and responsibilities. Okay, second point. So presided the council of minister meeting ta presided kare how को मैंने कहला रिसफल भी करि परिबे से जण को कहिबे रिजाइन करिया पई अदरवाइज प्रेसिडेंट को कहि डिसमिस करै परिबे तडा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नै कि तांकर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी संध्या प्रेसिडेंट को नै कि कोन तांकर रोल दे रहउछि डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट को जाने रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर को संगे प्रिंसिपल चैनल कम्युनिकेशन एंड स्टार्टर जो हमारा इंपोर्टेंट ऑफिसर्स वाले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया PSC चैनल कमीशन से तो समस्तंगर जो अपॉइंटमेंट हुए जत्ते को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रो तार रिकमेंडेशन ता किए दियंती प्राइम मिनिस्टर ओके सिंगल मेंबर कुछ भी मैंने ओके सो नेक्स्ट हमारा को कमिटी रा से चेयरमैन नवीन को कमिटी रा चेयरमैन से ओके नीति आयोग रा चेयरमैन आओ इंटरस्टेट काउंसिल चेयरमैन ओके वाटर रिसोर्स रा काउंसिल जो ये आओ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से होचंदी चेयरमैन आओ प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन हमें कहला ऑफ द गवर्नमेंट तो ये गुडा का ओके मैनेजर इन क्राइसिस रा से होचंदी हमरो चीफ ओके अच्छा प्रेसिडेंट जणे बस प्रेसिडेंट जदि जणे सपोज सॉरी जणे प्राइम मिनिस्टर हवा पई हेले whether he is a member of Lok Sabha or Rajya Sabha को भी either house of the parliament जदि जणे हेई नथिबो हेई परिबो केते दिन भितरे से 6 मंथ भितरे either house of the parliament रो से हमरा मेंबर हवा निहति दरकार ओके एंड केते जनकर एग्जांपल कुह जे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हेछन एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी ओके एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी हाँ मोरारजी देसाई आओ चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया के पीवी नरसिम्हा राव ओके एंड तमे जानि जे तांको भारत रत्न भी दिया जाय ओके लास्ट टाइम हमर जो भारत रत्न दिया गला पीवी नरसिम्हा राव डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवी नरसिम्हा राव एनीवन नो हाँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवी नरसिम्हा राव सीजीएल क्वेश्चन श्यामला वेंकटपति नरसिंह राव ओके तो आंध्र प्रदेश रे हमरा चीफ मिनिस्टर थिले ओके व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम अब्दुल फकीर जलालुद्दीन ओके तो एडा तमरो हमर एसएन सर माने तांको स्टोरी बहुत तांकर ओडे वीडियो एसएन सांकर ओडे वीडियो अछि यू शुड सी कि अब्दुल कलाम कर माने रियल जो लाइव स्टोरी सर ऑलरेडी 6 वर्ष ता संगे काम करि छथि तो से जानि छथि तो कोन कोन तांकर इनसाइड स्टोरी जो हमें कहूचे बहुत इनसाइड स्टोरी तांकर सर बहुत शेयर करंती सो सेइथिरे गोटे थरा हमर तमे जानो जे लीडर तमर हबो देखो जेतले गोटे भूल हे जाए समस्त मु करनी से करछि एंती कोन ओके किंतु जे लीडर जेतले कोनोसी फेल्युअर हुए लीडर शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी ओके तो जेतले हमरो अग्नि रा टेस्ट होतला अग्नि रा टेस्ट होतला तो टेस्ट फेल्युअर हे गला फास्ट टेस्ट फेल्युअर हे जेतला तो सेतबेले इसरो रा चेयरमैन थिले विक्रम साराभाई ओके तमे सुनिछ विक्रम साराभाई करना हमर प्रथमे जो हमें कहूचे हमर जो टेस्टिंग हेतिला तमर साइकिल नै के हेतिला तमे पिक्चर देखिवो जो थुंबा इक्वेटोरियल एरू साइकिल पछपटे तक नदी नै के हमर करा हेतिला तो अग्नि एतले हमर फेल्युअर हैला हमें भाबो गोटे मिसाइल धर टेस्ट ए सब तयारी करिया पई मिनिमम तमर क्रोर्स ऑफ रुपीज
तमरा मंगलाम जो हमरो सेकंड टा जो फेलियर हैला हम केते कोटी टका खर्च होइतला जानि छ हां 400 कोटी टका ओके तो एमिति कले 100 कोटी टका बेंगल रे फोपाडी दिया गला भले लागिला ओके तो जेतेबेले फेलियर हुए गोटे मिशन टा सेतेबेले कोन ह्यूज कारण एटा गोटे तमरा जणा नै एटा कोन हबो न हबो ठीक रे हम भाबो जे हमर जो चंद्रयान फास्ट सक्सेसफुल हेतला चंद्रयान 2 जेतेबेले हमर देतला चंद्रयान 2 रे कोन हेतला तमे जानि छ जे प्रथमे हमें कोन करथले ना चंद्र चारिपटे खाली बुलिया पे गोटे छाडिथिले जेटा बुलिया पे छाडिथिले ताको कोन कहंती ऑर्बिटर ऑर्बिटर काम कोन ना चारिपटे खाली बुलिबो चंद्रयान 1 सक्सेसफुल काहे हेतला ना सेटा गोटे ऑर्बिटर थिला खाली ता चारिपटे बुलिबो किंतु चंद्र रु जाई कि गोटे लैंड करिबा लैंड करी कि चंद्र रो सरफेस रे मून रो सरफेस रे गड़ीबा सेथरु सैंपल कलेक्शन करिबा फोटो उठेबा एक्सपेरिमेंट करी कि छाड़ीबा इट इज ए ह्यूज टास्क तो सेकेंड रे जो हमर जो मिशन हेतला चंद्रयान 2 रे दीडा जाइतला गोटे तो ऑर्बिटर से जेमति कि फास्ट जोटा बुलुथला से बुलिबो सेकेंड कोन हला ना गोटे लैंडर थिला लैंडर रो काम कोन जाई कि लैंड करिवो एणु लैंड करिवार जोटा थिला तार ना थिला कोन विक्रम सो विक्रम जोटा हमर थिला माने गोटे एमति पूरा टोटल माने इक्विपमेंट हमर जाई कि लैंड कला भितर ता भितर गोटे रोबोट टे बाहरियो जे कि हमर चंद्र सरफेस रे मूव करियो जोटा बाहर की मूव करियो ता ना कोन थिला जानछो रोवर रा ना कोन थिला हां रोवर रा ना कोन थिला प्रज्ञान ओके रोवर रा ना थिला हमर प्रज्ञान तेणु सेतेबेले हमर जेतेबेले सेई जो सेकेंड रे तमे जानिछ प्राइम मिनिस्टर जाई कि हमर इसरो रे बसथिले राती 12टा गोटे समय तले लॉन्च होतला जेतेबेले लैंड करिया को थिला एंड लास्ट 1 मिनिट पाखा के थिला एटा कोडे गायब है दे लॉस्ट द कांटेक्ट अन तमे से वीडियो जदी देखिबो सेइथरे इसरो चेयरमैन सेतेबेले थिले के शिवान थिले कांदी पके थिले एंड प्राइम मिनिस्टर सेठी तांको माने आश्वासन देथिले फेल हेले कोन हबा हमें आउथरे विल रिबाउंस बैक कान तमे जानि छ जोडा कि चंद्रयान 3 जेतले हला सक्सेसफुली हमें लैंड कले ता भितर हमर रोवर प्रज्ञान बाहरला एंड जो पॉइंट रे लैंड करिथिले तार ना कोन जानि छ हां शिव शक्ति ओके एंड इंडिया होची फर्स्ट कंट्री जे कि साउथ पोल रे हमर साउथ पोल टा पूरा अंधारिया ओके हां साउथ पोल रे लैंड करिथिला एंड साउथ पोल रे पूरा हमें कहबा आइस ए सब भले हमर सिचुएशन हमर थिला तो साउथ पोल रे आज जाय के लैंड करना है तो जोटा कि डार्क जोन आसुची साउथ पोल रे लैंड करी कि जो पॉइंट रे हमें सक्सेसफुली लैंड कले एंड ता परे हमें कोन कले ना रोप करी कि सेथरु पिक्चर एंड सेइथरे तो एटा कम पे पठाइतला जानि छ जे हमें कम पे पठेले जे चंद्र को एमती तो तार मिनरल मैपिंग जे जो चंद्र रो मून रो सरफेस रे जो सेठु जो से माने कलेक्ट कले जो मटेरियल कलेक्ट कले कोन सेथरे मिनरल अछि फर्स्ट कथा सेकंड कथा होची जे तार एटमॉस्फियर रो कंपोजिशन कोन तो सेइथरु देखा गला जे तार एटमॉस्फियर कंपोजिशन रे कार्बन डाइऑक्साइड अछि कार्बन डाइऑक्साइड जदि अछि वाटर रो माने तमरो पॉसिबिलिटीज अछि तेणु तमरो एबेठू लोक माने जेमति कि हमर कोन करछंती ना फ्यूचर रे तमरो सेठी लाइफ रो पॉसिबिलिटीज जाई कि जने रही परिबो से भला जदि हमर पृथ्वी फुल हे गेला कोन करिया चंद्र को जीवा लोक एबेठू बुक कलेनी तमर जेमति नै इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तमे जेंते बुलिया गयो छ नुवा वर्ष रे जाउ छ हमें चला जीवा चिल्का बुलिया को कि चला जीवा हमें कोठी गोटे पिकनिक करिया को जाउ छ सिमिलरली लोक एबे पिकनिक करिया को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी टिकट बुक करिकि ना बुक करिकि रखलेनी ओके तो कहिबार तात्पर्य होछि जे जेते बेले हमर ई अग्नि 5 फेल्युअर हैला सेतेले विक्रम साराभाई थिले हमर इसरो रो चेयरमैन थिले एंड ए प्रोजेक्ट रो डायरेक्टर थिले कोन के थिले ना हमर एपीजे अब्दुल कलाम 100 कोटी टका पूरा जेतेले माने जाउथला ब्लास्ट के जेतेले बे ऑफ बंगाल ले पडिला ले मिनिस्टर जो साइंटिस्ट माने कोन करू छथि 100 कोटी टका बे ऑफ बंगाल ले फोपाडी दिया गेल तो सेतेबेले विक्रम साराभाई जेतेबेले थिले चेयरमैन तो सी
APJ Abdul Kalam कहले you stop, you stay here, I will go and I will face the media. तो मीडिया वाला को कहले द जहाँ भी लॉस है और जहाँ भी फेलियर है the sole responsibilities, it is only my failure and I am solely responsible. किंतु सेथिरे सब तो अलग लोक माने करूथले किंतु की लीडर हिसाब रे थिले ना विक्रम सर है तो सेठी एपीजे अब्दुल कलाम माने पूरा टोटल शब्द हो गले कि जो थरे कि पूरा ब्लेम टा से ने जनले तापर जेतले सेकंड टाइम जेतले अग्नि 5 आउट रे टेस्ट हला सक्सेसफुल हेले तो सी विक्रम साराभाई कहले तो कहले सर वी हैव सक्सेसफुल यू कैन गो माने हां तमरो प्रेस को सर यू कैन कम एंड विल एड्रेस द मीडिया नो नो आई विल नॉट गो यू गो एंड माने यू डू द स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया सो सक्सेस जेतले हुए you should give the credit to the team failure जेतले हुए you should take the responsibilities तो सेटा होची गोटे गुड लीडर रो क्वालिटी किंतु आज का डेट रे कोन फेलियर हैला बोले कहबे से करथिला आमे थिनो ता जगो हैला समस्त नै किंतु जे रियल लीडर जे हबो तो सी ही शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी दिस इज माय फेलियर देखो जेतले धर राहुल गांधी सपोज कोथरे को पार्टी धर बिहार इलेक्शन हारि गले सी माने कोन करिवे ना अन्य माने को दोष देबे या जगो हैलानी किंतु मोरल रिस्पांसिबिलिटीज जने लीडर नि नबा कथा सक्सेस हैला बेले समस्त कहे राहुल गांधी जो आम 100टा सीट जीतिलु किंतु फेलियर हैला बेले केही भी कहबेनी कि राहुल गांधी जो आम फेलियर हे किंतु हमें एज ए लीडर यू शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी यस मोर एठी फेलियर हैला हमें यू शुड माने सेटा गोटे गुड लीडर रहिडा नाही एथिरे किछि माने फेल लाइफ रे किछि माने एमिति केही नाहांदी लाइफ रे जे कि के फेल हे ओके हजार थर फेल होइछन्दी पिला ता पर जे ठिया है कि माने लड़ी जे से सक्सेसफुल हेछि तेनु फेलियर तमे भावनी जे सेइथरु हमें सिकिबा सिकि कि आगु को पुणी ताकू केमदी सक्सेस हबा चंद्रयान 2 रे हमें फेल हेले चंद्रयान 3 रे हमें सक्सेसफुल हेले ओके हमें केबे भाबियोनी कि फेलियर इज द एंड ऑफ लाइफ कि सेडी सरी गला बोली तो गोटे गुड लीडर रो एटा होछि व्हेनेवर तमरा कोनोसी फेलियर होछि यू टेक इट एज ए लेसन एंड मूव फॉरवर्ड है कि पुणी सक्सेसफुल हे पारिले ताहले तुमको समस्त मन रखिबे ओके सो लेट्स स्टार्ट एटा यूनियन एग्जीक्यूटिव रा केतडा क्वेश्चन हमें करूथिले सो लेट्स कोडे हमें केतडे क्वेश्चन आउ करबा इथरे ए क्वेश्चन कर 2022 रे पड़ितला ए क्वेश्चन ना
Sir, the Constitution of India classify the minister in four areas. What I पढ़े okay ठीक है. Second हाँ total minister including the prime minister shall not exceed 15% of the total member of the Lok Sabha. एटा हमें कहले okay. तो हमें कौन ताले total तीनटा अच्छी ओके फास्ट हमर तीनटा अच्छे हम देखिबा ओके एंड सेकंड जोडा रहला ठीक अछि हमर 15% मु कहितली टोटल लोकसभा जति की तार 15% हमर रहइबो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर तो आंसर बी पढ़िबा एटा पढ़िने एटा कर देथिले मो प्राइम मिनिस्टर ओटे देखुची क्वेश्चन ओके प्राइम मिनिस्टर किसी क्वेश्चन करबा तापर हमें घटना चक्र करबा ना ना घटना चक्र आंसर दे देछि प्रेसिडेंट चक्र आगे ना वाइस प्रेसिडेंट का कराया अगला क्वेश्चन अच्छा वाइस प्रेसिडेंट करो क्वेश्चन किछटा करबा सेकंड क्वेश्चन कलो Council of State. Second, third question number third. Answer कौन होगा? All the member of both house of the parliament. हमें कोई दिले elected and nominated both. State रे कौन सी representation होनी? तो किए हमारा president को election रे भाग नियंती जे कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नियंती किए वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन में भाग नियंती जे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नियंती ओके नॉमिनेटेड मेंबर ओके बुझी परलो किए हमरो तो आंकर इलेक्शन आउ प्रेसिडेंट करो
का कोडा संगे समान भाइस प्रेसिडेंट कर इलेक्शन जो माने भाग नियंती तो प्रेसिडेंट कर कोथरे समान इम्पीचमेंट प्रोसेस रे तो बोथ हमरो माने इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर माने भाग नियंती तेनु आकु जहा तुमको बुलेई की पकेले करि परिबो एंड आकु बुलेई की पड़िबो परीक्षा रे आकु बुलेई की पड़िबो सेतले कंफ्यूजन होबनी ओके Vice President of India is elected by member of both house of the parliament. Okay. The proposal relating to dismiss of vice president can be presented in very important question. मने रखिबा vice president को बाहर करिवार से जो प्रोसेस ता कोड इनिशिएट हुए राज्यसभा रे इनिशिएट हुए राज्यसभा. Okay, 6 number question. A resolution for removal of the Vice President of India can be proposed in only Rajya Sabha. तेनु तमे question मने रखु था को पॉइंट ता इंपोर्टेंट था. Okay, who is the chairman of Rajya Sabha? Vice President. Which of the following is presided over one who is not its member? ओके राज्य सभा एथरु कोथिरे जने प्रिसाइड करे जे कि तार मेंबर नहीं राज्य सभा जे माने प्रिसाइड बाय हुम वाइस प्रेसिडेंट वेदर वाइस प्रेसिडेंट इज ए मेंबर ऑफ राज्य सभा नो सो सेटा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वन हु इज नॉट इट्स मेंबर तामरो राज्य सभा. तांका भितर किए एम्बासेडर हाई कमिश्नर थिले ता परे हमरो वाइस प्रेसिडेंट हेथिले एस राधाकृष्णन थिले तांका संगे हां हेवी गिरी. ओके आंसर के 9 नंबर बी. ओके सो आमर एम्बासेडर सर आस्थिले एम्बासेडर पे भाबनी छोटो माने पोस्ट यदि कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज देखिबा ओडा आईएएस रो ऊपर होची एम्बासेडर पोजीशन वाइज यदि देखिबा ये रे. ओके सो एम्बासेडर सर क्लास नेबे जनवरी मिड रो सर कहिसनी माने हमर ये नेबे तो सी हमर रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेटेड अफेयर्स उडा को रहिला तो तापरे मिलल इंटरनेशनल रिलेशन नाही किंतु प्रीलिम रे अछि तो से रिलेटेड गुडा को मेन ओरिएंटेड जो गुडा को रहिला तो तारो सर क्लास नेबे. ओके एंड एसएन सर भी क्लास नेबे तमरो ज्योग्राफी स्टार्ट हो नेक्स्ट वीक रो ज्योग्राफी एंड जो हिस्ट्री भी हम स्टार्ट करियो. ओके सो मु चाहू जे वीकेंड रे टिके हमें जदी पार्लियामेंट चैप्टर सरी जबा सो दैट हमें केवल यूनियन गवर्नमेंट ता टेस्ट करि परिबा सो दैट. ओके एंड ता संगे किछि. ओके सो एटा गला प्राइम मिनिस्टर ऊपर जदी हमें देखिबा केवल प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड क्वेश्चन देखिबा मते 2 नंबर क्वेश्चन को हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट 3 नंबर क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर को ऊपर कोडा ठीक अछि. Prime Minister is the real head of the Council of Ministers. Prime Minister of India is the appointed. Okay, appointed करंती by president हमें कहले आग देखो प्राइम मिनिस्टर को हमें कोन इलेक्ट करूचे हमें इलेक्ट करूचे एमपी को सो सेमानकर जो मेजॉरिटी पार्टी आसीबो सी जन को हमर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपॉइंटमेंट करिवे जो सिलेक्ट करिवे तापरे प्रेसिडेंट तंको हमर अपॉइंटमेंट होछन. ओके
So Article 78 lays down the duty of Prime Minister. Cabinet आम पढ़िबा. Who exercise the actual or executive power under parliamentary form of government? Question number 7. हाँ? Real पचार है ना? Actual and executive power under parliamentary. Okay. Actual executive हमारा किए? Prime Minister. IAS 1997 ना question कलो. 8 नंबर क्वेश्चन. अपर हाउस माने राज्यसभा जदि से राज्यसभा बिलोंग करिथिबे ताहले कोन होबो कोन होबो मु पढे नै एडा पढेबी मने रख जी जो हाउस रा मेंबर से सेही हाउस रे केवल वोट दे परिबो यदि प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस रे से लोअर हाउस रे वोट दे माने लोकसभा रे वोट दे परिबे राज्यसभा रे वोट दे परिबेनी ये यदि राज्यसभा रे जने वोट दबो लोकसभा रे किंतु जेते मिनिस्टर अछंदी से माने दीटा का हाउस रे जाई बसी परिबे यदि जो क्वेश्चन जने पचाउची तार आंसर देबे डिस्कशन डिबेट रे भाग नेबे किंतु वोटिंग राइट कोठी रहइबो जो हाउस रे से मेंबर से हाउस रो वोटिंग राइट से हाउस रे तेनु ये जेतेबेला हमर प्राइम मिनिस्टर जेतेबेला हम कहले अपर हाउस हमर गोटे कथा मने रखि थाओ हमर नो कॉन्फिडेंस मोशन ता को हाउस रे आसे हमें कहिथिले गोटे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे काउंसिलर मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू लोकसभा ओनली सो as long as they have the majority in Lok Sabha they will be in the power the moment they lost the majority in Lok Sabha ता गवर्नमेंट भांगी जिवो राज्यसभा तांगर मेजॉरिटी न थाउ वर्तमान भी नाही ता बोली कोन गवर्नमेंट भांगी जिवो की जदी लोकसभा रे जदी तांकर मेजॉरिटी नाही ताले गवर्नमेंट भांगी जिवो सो रिमेंबर दिस पॉइंट हमें पार्लियामेंट चैप्टर रे पढिबा नो कॉन्फिडेंस मोशन ता केवल लोकसभा रे आसे नो राज्यसभा रा तार पावर किछि नाही नो कॉन्फिडेंस मोशन माने कोन जो मेजॉरिटी हमर प्रूव करा जाय वेदर यू हैव द मेजॉरिटी और नॉट तो सेइडा हमर कोठी ना लोकसभा रे केवल तेनु सीए जेहेतु हमर नो कॉन्फिडेंस मोशन ता कोठी हमर हबो लोकसभा रे ही विल नॉट एबल टू वोट इन फेवर ऑफ द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कारण नो कॉन्फिडेंस मोशन ता केवल लोकसभा रे जेहेतु ये राज्यसभा रे मेंबर पचार छंदी ये केवल राज्यसभा रे वोट दे परिबे ओके तो सेति में आंसर कोन हबो ए हबो ओके 2018 तमिलनाडु पीसीएस रे पडितला और 1997 रो ओके क्वेश्चन ठीक रे बिहार रा सबले क्वेश्चन दिके तांगर माने प्रॉब्लम थाए माने कुहाई थांदे जे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली ओके एडा हे थांदा कोन मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओके बोथ हाउस केम दी हे परिबा ना तमे दि जण दीटा का हाउस रे हबनी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तमरा लिखा होता हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द CSIR एडा OPSC रे क्वेश्चन ता पडितला हम जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR रो हमर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखि तो प्राइम मिनिस्टर होछनी ओके हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमिटी प्राइम मिनिस्टर डिफेंस कमिटी रो ओके IAS 2012 रो क्वेश्चन करो प्राइम मिनिस्टर ऊपर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज or her appointment need not necessarily be a member of house of the parliament but must be a member of one house within 6 months हमें कहले जदी तमे कोनोसी हाउस रो भी मेंबर हेई न चलिबो तमे प्राइम मिनिस्टर हेई फेरिबो राजीव गांधी हेई थिले ओके किंतु प्रोवाइडेड विदिन 6 मंथ भितरे यू शुड बिकम ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सो मिनिमम एज हमर केते दरकार प्राइम मिनिस्टर होबा पई हां 25 केते वर्ष होबा दरकार प्राइम मिनिस्टर केते केते वर्ष हां 25 हेई परिबो
तमे लोकसभा एमपी हे परिबो लोकसभा एमपी होबा पय ले केते तमर मिनिमम एज दरकार 25 वर्ष त 25 वर्ष रे तमे प्राइम मिनिस्टर हे परिबो अवश्य एटा टिके डिफिकल्ट तुमको एमिदी नाही कि तुमको माने ठिया हो प्राइम मिनिस्टर कर दे बहुत लोक लाइन अछंती सो 25 years is the minimum age required to become a यदि ए क्वेश्चन पचरा जाई छंदा टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट केते वर्ष प्रेसिडेंट गवर्नर 35 ओके मन रखि थाओ गवर्नर हुअंतु प्रेसिडेंट हुअंतु वाइस प्रेसिडेंट हुअंतु 35 राज्यसभा जदि मेंबर हबाकू चाहूछ एमपी हबाकू चाहूछ ताले 30 वर्ष लोकसभा रे केते 25 वर्ष ओके जदि तुम सरपंच हबाकू चाहूछ 21 वर्ष ओके वार्ड मेंबर हां ना कम 21 माने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे वार्ड मेंबर जिला परिषद जिला किंबा समिति सभ्य सरपंच 21 वर्ष ओके सो आमे पढिया पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे तमे कोनोसी मेंबर हबाकू चाहूछ यू शुड बी मिनिमम 21 इयर्स तुमको हेतका दरकार ओके तम तमे जदी ओएस देई पारुछ ताल तमे सरपंच भी हे परियो ओके द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एटा कोडी मेंशन नहीं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट कोडी मेंशन नहीं ओके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कि एथरे नहीं तो एटा ओटे हमरो मन इच्छा हमरो ओटे पोस्ट क्रिएट करा हितेटा केते नंबर क्वेश्चन अरे बहुत क्वेश्चन अछि 15 बी ओके तमरा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कोठु जाउथिले हां आसाम रे जाउथिले राज्यसभा मन रखि थाओ ए क्वेश्चन ता एमपीपीसीएस रे पडितला ओके से जत्ते थर रखथिले से आसाम रे जाउथिले मन रखि था मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम आसाम प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट 1996 रे गोटा आईएएस रे क्वेश्चन पडितला discussion in the case of person Sarvaj minister is coming. I mean, the minister is choice of prime minister. कौन हवा आंसर कौन सा बसरी नो आइडिया नवीन हाँ ओके हाँ so answer हवा C okay he has a full discretion in the choice of the person who are serve as the minister in his cabinet फॉर एग्जांपल तुमको जयशंकर कथा कहितली जयशंकर कोन मेंबर थिले लोकसभा की राज्यसभा कोन तांको केमते आनी कि से हमर कर दिले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तेनु से काहा को भी चूज करी परिबे प्रोवाइडेड तांको चूज कला पर से 6 मंथ भीतर ओडे मिनिस्टर हबो जोडे मिनिस्टर हबा पय हेले ही मे नॉट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा केही भी से जहा को चाहिबे मनमोहन सिंह केंदे राताराती उठा हितला फाइनेंस मिनिस्टर जतले करा गला ही वाज नॉट ए मेंबर जे आरबीआई रे गवर्नर थिले तांको टेकी नै कि हमर फाइनेंस मिनिस्टर करा गला तेनु तमे कोनोसी भी माने लोकसभा रा कि राज्यसभा रा मेंबर नुह प्राइम मिनिस्टर जहा को चूज करिवे डायरेक्टली तांको आनी कि हमर मिनिस्टर एस जयशंकर होसन क्लासिक एग्जांपल सीधा तांको आनी कि हमर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर करा हितला सो ही हैज द फुल डिस्क्रिप्शन in the choice of the person who are served as the minister in his cabinet provided say appointment hela pore within 6 months bhitere he should be a member of either house of the parliament
ओके सेति पई तमे सब बेले प्रैक्टिकल को भाबि थाओ काहे कि मु तुमको एग्जांपल देई कहूची जयशंकर का कथा हो कि तमरो अलग लोक कथा हो एबे बिहार जनकर कथा मु कहितली तांका पुआ तळे जीन पेंट बिल्डिंग बसले तांको मिनिस्टर कर दिया गला तेनु जी चीफ मिनिस्टर तांकर पूरा पावर अछि जहा को चाहिए मिनिस्टर करि परिबे ना नहीं तो सेति पई he has the full discretion in the choice of the person who are to be served as a minister of his cabinet बुझी पारछ ना नहीं तमे एइडा कहिलो ठीक अछि ओके तो एइडा कोन होची ना तमरो ओनली फ्रॉम दोज हु आर मेंबर ऑफ आइदर हाउस ओनली नो बाहर लोकन भी से करि परिबे ओके तेनु सेति पई तमे दला आईएएस रे क्वेश्चन देखुछ कोडा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सेटा को तमे देखिबो ओके नेक्स्ट सेम जिनसटा परीक्षा रे पड़ितला ओके 6 मास जाय हेबे 6 मास से जदी से मेंबर न होई पले से पळेबो so in India a minister who is not a member of either house of the parliament will cease to be a minister after 6 month परे तांकर मिनिस्टर पद चली ओके एटा पढिबा एक क्वेश्चन पढितला बहुत गुडे परीक्षा रे मु जो लाइन कहूची यू शुड बी प्रिंटेड इन योर माइंड to whom the councillor minister is responsible parliament okay in general it is parliament in particular it is lok sabha okay so tomorrow council of minister is responsible to lok sabha only okay एटा इथरे हमर कोन ना आंसर टिके एपट सेपट अछि पार्लियामेंट तमरो आंसर 21 कोन देछि 21 रा आंसर ए देछि ए इज नॉट करेक्ट ओके ए इज नॉट करेक्ट हमर कोन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पोंसिबल टू लोक सभा ओनली रिमेंबर दिस पॉइंट स्पीकर ऑफ द आंसर कोन देछि नहीं 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 स्पीकर 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 को कौन से रेस्पोंसिबल लोकसभा को सीए लोकसभा रे सेमानकर मेजॉरिटी अछि ना नहीं चेक करा जिवो तो लोकसभा रे तांकर मेजॉरिटी अछि ना नहीं किए प्रूव करिया को किए देबे डायरेक्शन के दे प्रेसिडेंट देबे डायरेक्शन सो दे आर रेस्पोंसिबल टू लोकसभा ओनली ओके तो क्वेश्चन एक्चुअली भूल देछि इन जनरल एटा ठीक अछि पार्लियामेंट बट इन पर्टिकुलर इट इज लोकसभा ओनली ओके हां कोंडा नहीं नहीं रेस्पोंसिबल माने कोन आर मीनिंग होची पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे रेस्पोंसिबल टू लोकसभा रे मीनिंग होची जे as long as they have the majority in लोकसभा they will be in power तेनु राज्यसभा रे तांकर जदी मेजॉरिटी नाही तांकर कोनोसी असुविधा नाही वर्तमान भी गवर्नमेंट रो राज्यसभा रे मेजॉरिटी नाही ता माने कोन गवर्नमेंट भांगी जिवो किंतु द मोमेंट दे लॉस्ट द मेजॉरिटी इन लोकसभा गवर्नमेंट इमीडिएटली कोलैप्स हो जिवो नो कॉन्फिडेंस मोशन तांको विरुद्ध रे आसीबो से माने को कुहा जिवो यू प्रूव द मेजॉरिटी ओके ए क्वेश्चन ना पढितले देखो The council of minister collectively responsible who is of the followers. Okay, the answer कौन हबा? लोकसभा. हाँ नॉट करेक्ट ओके प्रेसिडेंट रूल हमरो लागू हबन हला हम पढी बेटा पढी ने
एटा भी सेम क्वेश्चन यूनियन काउंसिल मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू ओनली टू लोकसभा आईएस 1995 रे पढ़ितला गोटे क्वेश्चन करो नॉट पचारि A. हाँ हम आंसर आंसर बी हम ओके से पचारि जे कोडा हमर पार्लियामेंट माने संविधान लेखा नहीं किंतु एटा कन्वेंशन हमर हिसाब रे कर दे हमर कोन ए जो हमें कहले प्राइम मिनिस्टर हम देखो फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा नो अबे निर्मला सीतारमण राज्यसभा रे मेंबर ओके तापरे हमर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जदी नाहांती तांको बदल रे किए हेबे प्रेसिडेंट का ऑफिस को जिवे सीजीआई हमर तेणु एटा भी भूल तेणु ऑल थ्री पार्ट सबु पार्ट रो हमर रहबे एमिदी इंडिया रो नाही नॉर्थ ईस्ट रू कोन सब त्रिपुरा फिपुरा रो मिनिस्टर नाहांती ओके तेणु हमर आंसर कोन ना प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ए लूज द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एटा कन्वेंशन अछि किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा है ओके हमें पढ़ी ने पढ़ीवा जोडा पढ़ी छे नो कॉन्फिडेंस मोशन डा कोठी हमर पास से हम कहितली लोकसभा रे ओके आफ्टर रिजाइनिंग whose permission does a minister require to give a statement in Lok Sabha None of the above. कितना नंबर क्वेश्चन थिला बी ओके सो स्पीकर हम पढ़ी नहीं लोकसभा रे इंट्रोड्यूस होगा पई मिनिमम केते नंबर हमर दरकार सेटा 50 जन हम दरकार एटा पढ़ीबा आगो एटा ना फा गुडा को फैक्चुअल क्वेश्चन एटा नहीं ओके ना मैं पढ़ीबा एटा एटा तमे को 38 चंद्रशेखर आउ आम 6 जन कथा कहले मोरारजी देसाई पीवी नरसिंह राव चौधरी चरण सिंह नरेंद्र मोदी आउ कहा कथा कहले देवगौड़ा चीफ मिनिस्टर थिले कर्नाटक रो ओके ए माने कर कथा एलपीजी रा का समय आसला PB Narasimhan.
पीवी नरसिंह राव ओके तले प्राइम मिनिस्टर थिले एटा देखिया कहला कोडा नॉट ट्रू डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोडा नॉट ट्रू हाँ सी इज द करेक्ट आंसर ओके ओके सी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर थिले आरबीआई रो गवर्नर थिले जी आरबीआई रो गवर्नर हुए हमें गोटे पॉइंट पढ़ी थिले ही विल रिप्रेजेंट गोटे हमारा इंडिया रो फाइनेंस मिनिस्टर आउ माने आरबीआई रो गवर्नर आज रिप्रेजेंट हिसाब रे आईएमएफ को जानती हमें पढ़ी थिले ना नहीं जतले इकोनॉमी रो पढुथिले वर्ल्ड बैंक आउ आईएमएफ ए सब पढुथिले सो फार्मर हमारा फार्मर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट आईएमएफ से फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन नथिले प्लानिंग कमिशनर थिले डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमिशनर चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर थांती और नीति आयोग रो चेयरमैन तो प्राइम डेप्यूटी चेयरमैन से हमन थिले एटा पढ़े नहीं पढ़े भी एबे को व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91 90%. total minister including prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha तो एटा मन रखि थाओ 91 नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे हितला जे टोटल मिनिस्टर केते रु एक्सीड करिवेनी हमर 15% एक्सीड करिवेनी 95 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2009 रा आईएएस रो क्वेश्चन थिला ओके 2003 रे पढ़िबा एडा करबे हम ओके देखि दो जोडा को हमें पढ़ी छे हां 2014 रे क्वेश्चन पड़ला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ए क्वेश्चन टा हम खोजुतले क्वेश्चन नंबर 50 आ तो मॉक टेस्ट रे क्वेश्चन आसीबो 2 मार्क तुमको कहि देले हां A only. One only. हाँ तो प्रेसिडेंट करो हमें चैप्टर रे पढ़ी थिले एग्जीक्यूटिव पावर रे पॉइंट थिला ना नहीं executive power all the executive action taken in the name of president second thila the president shall make rules and more convenient transaction of the business of the government सेटा में executive power बोले president और उसने real executive हां PM हां ना रियल एग्जीक्यूटिव सेति पे हमें कहै छै एटा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के रियल एग्जीक्यूटिव के तो रियल एग्जीक्यूटिव हिसाब रे हमें कहले तो एटा तांको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट करो एटा लिखा हितला ना नहीं ए पॉइंट तो आंसर कोन है जो only one is the correct answer okay 50 number doubt होची तुमको 50 नंबर आंसर है हां 50 नंबर है ओके एंड एटा आईएएस रे पढितला 2014 रो क्वेश्चन थिला ओके तेणु सेकंड रे कोन हमर भूल अछि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall be expressed to be taken in the name of प्रेसिडेंट कर एग्जीक्यूटिव पावर रो प्रथम पॉइंट थिला जे ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट सेकंड पॉइंट थिला जे द प्रेसिडेंट शैल मेक तमे प्रेसिडेंट चैप्टर खोली कि तांका एग्जीक्यूटिव पावर देखो एटा फर्स्ट पॉइंट थिला एटा सेकंड पॉइंट ओके सो माने रखिबो सेति पई लक्ष्मीकांत रो शॉर्टकट मते कोन लक्ष्मीकांत रो ईच एंड एवरी लाइन होची आईएएस रोडे क्वेश्चन ओके तेणु 6 थरा जदी लक्ष्मीकांत न पढिछ भाव जे लक्ष्मीकांत मु छुईनी मिनिमम 6 टाइम्स पढिबो ओके ओके तमे बही देखो सेकंड पॉइंट आ कोन लिखा है
ओके नेक्स्ट होची 52 नंबर टा करो 52 नंबर क्वेश्चन नंबर 52 तेणु आम पढ़िले जहाँ जहाँ पढ़ुचे थरोली मुझे तुमको क्वेश्चन करोची सो दैट तुमर आउ थे से चैप्टर रिवाइज हम खाली पढ़ीदेले हेनी अनलेस अंटिल क्वेश्चन कला तुम जानी पारे केते बुझी न बुझी हाँ यूनियन काउंसिल मिनिस्टर शाल कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा यूनियन काउंसिल यूनियन मिनिस्टर शाल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर देछि प्रेसिडेंट सो कौन हम ओनली वन है 2013 आईएएस क्वेश्चन करो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ ए क्वेश्चन तमरा मॉक टेस्ट रे जतक इंपोर्टेंट कांसेप्ट पढ़िबो ही पढ़िबो टू एंड थ्री 2 and 3 नहीं नहीं एक्चुअली बाहर करंती रेकमेंड करंती ये किंतु बाहर करिवे किए प्रेसिडेंट बाहर करिवे ना सीए ही कहिबे हले किंतु कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जे ये तांको कहिबे ताबरे बाहर करिवे नहीं काउंसिल मिनिस्टर शाल बी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जेतेबे देखिबे मानकर लोकसभा रे मेजॉरिटी नाही तो तांको कहिबे तमे प्रूव कराओ तमर मेजॉरिटी जदी प्रूव न करि पाइलो तो तमे रिजाइन करिबो अदरवाइज मु डिसमिस करिवे ओके तो देख प्रथम डा द काउंसिल मिनिस्टर इन द सेंटर शाल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट लिखा है सेटा रॉन्ग लोकसभा ओनली तेनु तुमको जो लाइन कहूची इट शुड बी प्रिंटेड इन योर माइंड परीक्षा रे सेही लाइन ही पढ़िबो पार्लियामेंट देइथिबो तमे ठीक मारिबोन एटा कोन लोकसभा ओनली सो एटा भूल सेकंड यूनियन मिनिस्टर शाल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि थर्ड प्राइम मिनिस्टर शाल कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन आमे कहि दिले इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जहाँ नुआ नुआ लेजिस्लेशन आसुची जहाँ भी हमर प्रोविजन आसी सब जणांती कहिथिले ना नहीं तेणु सेदि भाई मु कहली लाइन बाय लाइन जो चैप्टर पढुच 25टा क्वेश्चन प्रिलिम रे पढिबो तमरो पॉलिटी तक भल से पॉलिटी बहिटा को 6-7 थरा पढि दियो आमे जो जो चैप्टर पढुचे हमको मु लाइन बाय लाइन पॉलिटी रे पढौची लक्ष्मीकांत रो मु एमिति हेले तो समरी आनी कि गोटे पेज रे पढै दियो लाइन बाय लाइन एथि पे पढुची एवरी लाइन मु चाहू जे 25टा क्वेश्चन जेमति ठीक हो परीक्षा रे गोटे भी भूल हबनी सिमिलर थिंग आमे करिबा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मु पढै भी तुमको लाइन बाय लाइन जहाँ परीक्षा रे पढिबो एई दीडा जदि तुम भल से पढि दउछ 40टा क्वेश्चन हमर पक्का हे आ करंट अफेयर्स भी मु करिवे प्रीलिम पास करिया पई जहाँ दरकार सबु आमे करिबा किंतु तमे सेइडा को केते दूर पढुछ डिपेंड करछि तम ऊपर तुमको सेई कथा मु कहली पढै देली तमरी भितरे पिला अछंती ताकू रिगरियसली पढ़ी की पिला माने लास्ट टाइम तम प्रीलिम बहुत पिला क्वालिफाई करके लिखुछन तम ऊपर डिपेंड करूछि ओके सो पढ़ी दब जो जोड़ा हम पढ़ुचे सेटा को पढ़ी दब एटा नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन मु पढ़ेनी पढ़ेबी मु कहिबी ओके छाड़ी दियो ओके एबे हमें कोन करबा ना आसीबा ए गोटे क्वेश्चन हमें करबा जोड़ा कि मु पढ़ेनी जेटा पढ़ेबी एबे ए क्वेश्चनटा करिके मु पढ़ेबी with reference to Indian government consider the following statement the Constitution of India provide that all cabinet ministers shall compulsorily a sitting member of Lok Sabha only common sense लगाओ मिनिस्टर जी हेबो केवल लोकसभा रु हेबो निर्मला सीतारामन ओके तेणु फास्ट स्टेटमेंट कौन अछि रॉन्ग अछि द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट अंडर the direction of Ministry of Parliamentary Affairs हाँ हबो neither one nor two हबो सर ओके तो हम पढ़िबा एटा भी यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी जो हमरो ये करंती
डायरेक्टली एटा हमरो अंडर द पीएमओ आसीबो ओके आंसर कोन देइ छेटा 63 ओके पीएमओ आसीबो पार्लियामेंटरी अफेयर नो एटा तो पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री को अंडर एटा आसुची कैबिनेट सेक्रेटरी ओके तो हम पढिबा एबे फैक्चुअल क्वेश्चन जे हमरो 1947 बेले केते जण हमरो मिनिस्टर थिले आर सेंटर आउ एटा केबे पडितला 2009 रे केते जण मिनिस्टर थिले सेंटर फैक्चुअल क्वेश्चन तो एबे तमे कहबो केते जण अछन तुमको पूरा लिस्ट देखिया पड़े हां 72 जण तमे देखिबो टोटल काउंसिल मिनिस्टर केते जण अछंती तांकर साइड को जाई के देखिबो 72 कि केते जण अछंती कि 65 कि कोन एमती अछंती तुम देखिबो मु जानि ने ठीक रे ओके तो तमे साइड रु देखिबो को माने नुवा अपॉइंटमेंट होछंती पूरा टोटल देखिया को पड़े हां कोडा कोडा 53 हाँ हाँ यूनियन मिनिस्टर्स shall hold the office during pleasure of the president यूनियन मिनिस्टर माने को माने जेतक मिनिस्टर आसिल ताऊ काउंसिल मिनिस्टर को आगला ओके दे आर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट यस प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जेतेबेले देखिबे जे मानकर मेजॉरिटी नाही तो तांको कहिबे कि रिजाइन करिया पई ओके ठीक अछि बुझी पारला नाउ कमिंग टू द टॉपिक हम पढिबा ओके सो सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर एथरे कोन कोन इंपोर्टेंट पॉइंट तमे जानि गलो जे प्रथम हैला जे देयर शैल बी ए काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देवा पे प्रेसिडेंट जहां भी करंती हेलो सर हां को कार की डाउट अछि की कार किसी डाउट अछि देखो ओके ठीक अछि तो हमें कहिले प्रथम पॉइंट मने रखिबा कोन आर्टिकल 74 कोन कहउछि ना काउंसिल मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हमें कहिले निज इच्छा रे किछि करंतिनी तांकू जणे बैक रे जणे एडवाइस दोछि से अनुसार से माने काम करछन ओके सो आर्टिकल 74 रो मीनिंग होछि so there shall be a council minister headed by prime minister at the prime minister are head हिसाब रे रहबे to aid and advise of the president who shall be exercise his function act in accordance with such advice so president निज मन इच्छा रे किछि करंतिनी तमे देखिला जे जेतक अपॉइंटमेंट दिया होछि किए दोछि प्रेसिडेंट को हमर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर दोछि ओके सो प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल मिनिस्टर गोटे हमर केवल अछि रिकन्सिडरेशन पई गोटे थर ये पठे परबे प्रेसिडेंट को पाखरे ये पावर अछि जे तांकु जदि लागिला कि इधर किछि चेंजेस करिवार अछि वन टाइम से रिकन्सिडरेशन पई पठे परबे काउंसिल किंतु जदि रिकन्सिडर हेइ के आसिला से सेडा अप्रूवल दवा पई बाध्य ना बाध्य नै बाउंड टू गिव हिज एस ओके तो एडा हमर द एडवाइस टेंडर बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो जहां माने एडवाइस देले को भी कोर्ट रे हेडा हमर इंक्वायरी हे परिबो प्रेसिडेंट को काउंसिल मिनिस्टर आउ प्राइम मिनिस्टर जहां भी एडवाइस दै छंती इट शुड नॉट बी कोठी हमर कोन ना को इंक्वायरी करा जाय परिबो नै सेकंड कथा ला जे हमर प्रेसिडेंट को अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट किए दोछन प्रेसिडेंट दोछन
आमे कहितले प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by the president and other minister also appointed by the president on the recommendation of the prime minister. तो प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करिवे का को हमरो मिनिस्टर करिवार अछि तो सेही अनुसार प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट देबे। आ उडे कथा हला जे वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट दिस इज तमर परीक्षा देखो केथर पढी सारी छेटा हम कहितले रिमेंबर दिस पॉइंट जे टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हमर केते जन रहि परिबे the total number of minister including the prime minister in the council of ministers shall not exceed kete percent kaharo 15% of the total strength of the Lok Sabha. So total strength of the Lok Sabha ebe kete 543 तो तार 10% केते ना तमर हे गला 54.3 हला आउ आर आधा हे गले 27.15 ओके तो केते हे गला टोटल 82 जन मेंबर हमर सेंटर रे मिनिस्टर हमर केते जन रहि परिबे 82 जन मैक्सिमम रहि परिबे। ओके जदी परीक्षा रे पढिला त एमती गोटे इनडायरेक्ट पढिला जे तमर हमर देश रे केते जन टोटल काउंसिल मिनिस्टर रहि परिबे तो आंसर कोन 82 तमे कैलकुलेट करके जानिथिबो। सो एटा हमर जो इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोक सभा ए प्रोविजन टा हमर केबे आसिला 91st अमेंडमेंट टा 2003 2003 रे हमर ए प्रोविजन टा आसिला। ओके हार्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब गुडा पढिथे परीक्षा पडला ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified on the ground of defection shall be disqualified to appointed as a minister एटा भी हमर 91st अमेंडमेंट जदी जने मेंबर डिस्क्वालिफाइड हे जायछि on the ground of defection ताले से मिनिस्टर हे परबे। सो डिफेक्शन ने केमे हमर डिस्क्वालिफाइड हुवंती आमे कहिले तमे गोटे पार्टी रे अछो जदी आ गोटे पार्टी रे जंप करि गेलो ताले तमे डिस्क्वालिफाइड हे तमे धर इंडिपेंडेंट मेंबर हिसाब रे अछो आमे पढिबा जोटा कि एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट रे आसितला 1985 रे राजीव गांधी को समय आसितला तेनु तमे गोटे पार्टी रहबे तमे कहिबो जदी हमर से पार्टी रे सपोज हमर ओडिसा रु सपोज अपराजिता षडंगी अछंती ओके मेम अछंती धर सीए वर्तमान एबे नवीन पटनायक संगे मिसी जिवे ताले कोन हबो ताले से डिस्क्वालिफाइड हे जिवे तो तांकर मेंबरशिप पळेबो से एमपी आ रहिबेनी तो जने एमपी रहिबन तो मिनिस्टर ही तो डिस्क्वालिफाइड जेतले जने हबो ता मिनिस्टर पद जदि थिबो भी पळेबो तार एमपी पद जहां भी थिबो डिस्क्वालिफाइड तो से पूरा रहि गेले। सो डिफेक्शन ने जदि हमरो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ने जदि हमरो जने बाहर उछंती तो से डिस्क्वालिफाइड हे। थर्ड पॉइंट हला द मिनिस्टर हैज सोल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ द जो पॉइंट उडा का में डिस्कशन करले मु सेति पे आगो क्वेश्चन कर देली सो दैट तमे चैप्टर पढला बेले तुमको लागबो जे को पॉइंट ए पॉइंट परीक्षा रे पढितला ना नै द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके सो प्रेसिडेंट हमर कोन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल रेस्पोंसिबल टू लोक सभा ओनली। ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल टू लोक सभा ओनली नॉट राज्य सभा नॉट पार्लियामेंट जदी तमरो नाही लोक सभा इन जनरल जदी अछि धर प्रेसिडेंट अछि प्राइम मिनिस्टर एमती अछि सो दे आर रेस्पोंसिबल टू इन जनरल प्राइम पार्लियामेंट बट इन पर्टिकुलर they are responsible to Lok Sabha only. The president shall administer the oath and office and secrecy to the minister जत्ते जण मिनिस्टर तमर हबे समस्त शपथ पाठ करिवे प्रेसिडेंट को आगे हमर जो दिन देख जो दिन प्रधानमंत्री हमर शपथ पाठ करछन से दिन होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर से दिन हमर एक्सटर्नल अफेयर समस्त ठिया कि हमर शपथ पाठ करछन नै तो सेडा हमर a minister who is not a member of the parliament either house for any period of 6 consecutive months shall cease to be a minister एडै परीक्षा रे पडितला जे जदी जणे हमर मेंबर नुहो either house of the parliament he can become a minister मैं कहले ना किंतु provided he should be a member of either house of the parliament within 6 months जदी 6 month भीतर एई न पारिले तांग मत मिनिस्टर पद चली सो सेदि बे हम कहले मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months shall be ceased to be a minister. Okay, salary allowance of the minister shall be determined by the parliament. तो एमानंकर salary allowance किए determine करिबो
पार्लियामेंट डिटरमाइन करी ओके सो एगुडा आम पॉइंट पढ़ी देचे आर्टिकल 77 जो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शैल एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ए लाइन भी परीक्षा रे पढ़ीथिला ओके सबु जहां भी गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव एक्शन निया जाउची कहा ना रे निया जाउची किंतु रियल बैकग्राउंड रे सब डिसीजन किए नउछंदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल द ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड इन द एग्जीक्यूटिव इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड and such manner may be specified rules of the president एटा तमरो रहिला देन ए जोडा में कहिले ए क्वेश्चन भी परीक्षा रे पढितला तमरो ओके आईएएस रा क्वेश्चन पढितला ना नहीं द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल और मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और allocation among the ministers as it is तमर जहा लाइन बाय लाइन वर्ड हुआ है आईएएस रा प्रीलिम रा क्वेश्चन से हुआ ओके सो लाइन बाय लाइन पूरा से मु तुमको कहली लक्ष्मीकांत को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ी ओके जदि आईएएस लेवल प्रिपेयर करिया को चाहूच ताहले लाइन बाय लाइन तुमको पढ़िया सीधा उठेबे एटा गोटे स्टेटमेंट कर दे ओके तापरे हमें देखिबा ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड किए हां हमें कहले जे प्रेसिडेंट का चैप्टर हमर एग्जीक्यूटिव पावर आमे पढ़ी प्रेसिडेंट गोटे आमर पूरा ठीक रे स्मूथली बिजनेस चलिया गवर्नमेंट रो से चाहिए गोटे कन्वीनिएंट माने स्मूथली कंडक्ट ऑफ द रूल्स रेगुलेशन आउ गवर्नेंस चलिया चाहिए गोटे नुआ डिपार्टमेंट भी क्रिएट करि परिबे धर फॉर एग्जांपल मु तुमको कहूची इंडिया रे आगुरु जल शक्ति मिनिस्ट्री नथिला प्राइम मिनिस्टर कहले मते वाटर कंजर्वेशन करिवार अछि आम इंडिया रे गोटे बिगेस्ट प्रॉब्लम वर्तमान होची हमरो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन हमरो बहुत बड़ क्राइसिस आगु को हबो ग्राउंड वाटर को नेकी तमे देखो एबे तमे चेन्नई जीवो मुंबई जाओ दिल्ली जाओ जोठी भी जाओ लोको ड्रिंकिंग वाटर किनी की पिउछन तमे चेन्नई फेने बेंगलोर जीवो केन वाटर जो 20 लीटर वाटर आसी समस्त घरे से तो ग्राउंड वाटर एते डिप्लीटेड हेलानी सेति पई हमरो नीति आयोग गोटे पर्टिकुलर गोटे रिपोर्ट बाहर करूची जार ना होची कंपोजाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आ सेही थिरे हमरो गुजरात होची सबटु बेस्ट स्टेट जे कि हमरो वाटर कंजर्वेशन करची वाटर कंजर्वेशन पई हमें कोन करूचे हमरो ओडिसा रे हो और नेशनल लेवल रे हो तमरा कोन करूचे हमें जानि छ हमरो प्रति डिस्ट्रिक्ट रे अमृत सरोवर हमर खोला होची अमृत सरोवर माने कोन सरोवर माने कोन पोखरी ओके प्रति डिस्ट्रिक्ट रे अमृत का वर्ड कहीं लगा है आजादी की 75 years सो 75 इयर्स हमरे कहि गलानी आजादी को केते वर्ष हो गला 75 इयर्स सो आजादी की जो अमृत महोत्सव रे हमें कोन करछु सब 75 तेणु सब डिस्ट्रिक्ट रे 75 टा पोखरी खोला जिवो एडा होची कोन ना अमृत सरोवर तेणु बड़ बड़ पोखरी खोला जिवो तेणु तमे देखिबो नवीन पटनायक घर साइड रे गोटे फ्रंट रे गोटे विराट बड़ पोखरी खोला है ओके तमरो सेही पानी तो कोन होची ना जते वर्षा पानी जीवो एते बड़ एरिया रे गोटे वाटर टा कंजर्व हेकि रहिबो ना नै तो सेही वाटर टा रहिले ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो ना ओके तमे देखो खरा दिने जोठी वर्षा दिने जोठी 200 हाथ रे पानी पडुतला 200 फुट रे तमे खरा दिन को जाओ सेटा 500 फुट 400 फुट को जाउ छेरी पानी तो ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट होची ओके आमे जो इरिगेशन करूचे आमे कोन करूचे केनाल इरिगेशन करूचे माने पंप लगे दउचे मन इच्छा कोन करूचे जो पर्यंत हमर बिल पानी फुल न है कि ओवरफ्लो न होईची से पर्यंत हमर मशीन बंद हबानी ओके तो आमे सेटा को एफिशिएंट इरिगेशन करिया गले कोन हबो ना आमे डीप इरिगेशन करिया गच्छ मूल रे एबे हेलानी माने ठोपा ठोपा पानी हमर गच्छ मूल रे पडुची सेटा को जे डीप इरिगेशन तमे देखुतबो पार्क उडा के स्प्रिंकलर इरिगेशन लगा हैची माने कोन माने तार ऑटोमेटिक से पानी चारियार स्प्रे कर दबो बंद हो तो ये स्मार्ट इरिगेशन प्रोसेस हम रहिबा दरकार एमिति नाही कि आमे छुआ दिने कोन करू तेंडा सज माने एमती माने कुअरु पूरा बुहाई कि देखिउ गोटे जमीर आमे घाई घाई कर देथु एटा फुल हेला परे पुनी एटा बंद करी के आरो घाई को एमती एमती करे जे एटा दिजार माने एफिशिएंट इरिगेशन नुहे ओके सो डीप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन ए सबडा हमरा करा दिबा निहाती दरकार सो हमें कोन बेटा कहउतले हाँ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे आमे कहउतले आजादी की अमृत महोत्सव रे
आमर कौन होची ना प्रति डिस्ट्रिक्ट रे 75 लाख पोखरी खोला जीव जोटा कि अमृत सरोवर। ओके ओडिशा रे गोटे छात योजना अछि छात योजना रे कौन होची जानिछो हां हां ना छाता योजना न छात योजना। ओके हां तो कौन करा जीवो माने छात ऊपर भी पानी जमी हो हेडा तो हेमिदी होउची ताले गवर्नमेंट कोन करछि तुमको 10,000 टंका दिया जीवो प्लास्टिक रो टैंक बसेबो छात योजना रे ओडे प्लास्टिक रे से जो हमरो जो रखन टैंक वर्षा पानी से कलेक्ट करिवो कलेक्ट करिकी तमे गोटे पाइप रे ग्राउंड को खोलाई थिबो से ग्राउंड रे छाड़िबो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके सो दैट से पानी टा जदी तळ को गला ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हला तो छात योजना रे किछि नो छात ऊपर टांकी बसिया को 10,000 टका दिया जाय तो एटा ओडिशा गवर्नमेंट रो छात योजना। ओके आम पोखरी ओके आगु मो पोखरी थिला अबे आम पोखरी तो आम पोखरी रे पोखरी खणिबो। ओके 10 तुमको लक्षे टंका दिया जाउची हमर प्रधानमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना और चीफ मिनिस्टर हमर मत्स्यजीवी कल्याण योजना रे तमे पोखरी खोलिबो लक्षे टका तेणु लोक तमर कौन करुछंदी तमर जोड़ा पड़ी धर पड़िया जमी सेठी नहीं कि खोड़ी की माछ चाष कर। ओके वाटर भी कंजर्वेशन हैला सेकंड तमर कौन हैला ना तमर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हैला मत्स्यजीवी कल्याण योजना रे तो एई भलिया हमर सिचुएशन ग्राउंड वाटर तमर एटा गोटे क्वेश्चन मेन रो क्वेश्चन दिया तमर 2-3 थरा पड़ितला ओपीएससी रे भी पड़िचे आईएस रे जे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एई वर्ष आईएस रो मेन क्वेश्चन देखो एई वर्ष 2025 रो आईएस रो मेन क्वेश्चन देखो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन आ कोन गवर्नमेंट तापे करछि 15 मार्क रो क्वेश्चन पड़ितला आईएस 2025 रो क्वेश्चन। ओके एंड ओडिसा रे जदी पड़िला ए क्वेश्चन हमें कहि परिबो छात योजना हो अमृत महोत्सव हो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो तो आकु हमें एफिशिएंट इरिगेशन करबा दरकार स्प्रिंकलर इरिगेशन डीप इरिगेशन ए पॉइंट गुडा को तमे लिखि पारे। ओके कोडा कोडा नहीं नहीं प्राइम मिनिस्टर कहबे देखो गंगा मिनिस्ट्री गोटे नथिला मिनिस्ट्री ऑफ गंगा गंगा पई गोटे सेपरेट मिनिस्ट्री नथिला कंजर्वेशन ऑफ द गंगा रिवर ता पई गोटे मिनिस्ट्री हमर क्रिएट करा गला। ओके तांको नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट पई गोटे सेपरेट मिनिस्ट्री सेडा नथिला तो प्राइम मिनिस्टर को लागिला जे गंगा रिवर को हमें कंजर्व करियो निहाती दरकार कि गंगा रिवर सफाई हबा निहाती दरकार सेति पई हमर गोटे सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट करा गला गंगा गंगा पई। ओके एंड सेही थिरे तमे जानिछो गंगा नदी कूल कूल जो इंडस्ट्री गुडा अच्छे रेस्ट्रिक्शन करागला तुम डायरेक्टली तुम केमिकल गंगा नदी भितर को छाड़ी पार तुम जो लोक मैंने सीधा नहीं कि माने डेड बॉडी फोपाड़ी दउथले कि गंगा पकईदे मुक्ति पाई से करें तुम ए देख गंगा नदी को पूरा क्लीन करा चारिपट तुम वाराणसी जाओ जो घाट गुड़ाक थिला आगु आबे जाओ केते नीट एंड क्लीन करा। ओके तो रिजर्वेशन हो गंगार रिजर्वेशन हो तार इवन इफ जो गुड़ाक ओपन डेफिकेशन होता गंगा रिवर ये पूरा गाँ गुड़ाक पूरा माने 100% टॉयलेट से क्रिएट करी करा जायछि स्वच्छ भारत मिशन। तेणु आमे कहूचे जे प्रेसिडेंट को जेते बेले कहिबे जे मोर ओडे नुवा मिनिस्ट्री दरकार तो प्रेसिडेंट सेटा क्रिएट करि परिबे। हाँ प्रेसिडेंट को से कहिबे जल शक्ति मिनिस्ट्री गोटे हमरो दरकार। ओके आमर जेंति ओडिसा रे आगु कोन ओडिया अस्मिता पई गोटे मिनिस्ट्री थिला कि तो चीफ मिनिस्टर कहिले गवर्नर को मत गोटे ओडिया अस्मितार मिनिस्टर से जीति के आसी ओडिया अस्मिता कही कही का। ओके से आमर कौन ओडिया कल्चर संस्कृति और अस्मिता गोटे सेपरेट मिनिस्ट्री आगु ओडिशा नथिला ए वर्ष क्रिएट करा है। ओके तेणु चीफ मिनिस्टर कहिबे सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर कहिबे प्रेसिडेंट को और चीफ मिनिस्टर कहिबे गवर्नर को सी गोटे सेपरेट मिनिस्ट्री हमर क्रिएट करि परिबे। ओके बुझी पारलो। सो ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो आम देखिले प्राइम मिनिस्टर कौन ड्यूटी रोचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे जे प्रेसिडेंट को जहाँ इनफॉरमेशन दरकार कौन नुआ लॉ आसुची
So to communicate the president all the decision of the council of minister relating to the administration of the affair of the union and proposal of the legislation, to furnish such information related to president जहाँ तांको information मागिबे, जहाँ नुआ law आसुची information सबू ये कौन करिवे ना हमरो president को provide करिवे. ओके आ गोटे कहिथिले जे तांकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की गोटे मिनिस्टर जदि कोनोसी डिसीजन नियै छंती एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटा जानि नांती से प्रेसिडेंट को पचारि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को पचारि वेदर यू नो इट और नॉट. ओके तो एडा हमर रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर. तापर राइट ऑफ ए मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द हाउस वेरी वेरी ए क्वेश्चन पडितला जणे जदि मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जदि लोअर हाउस रे अधर लोकसभा जदि हमें कहबा मनमोहन सिंह परीक्षा रे पडिबो मनमोहन सिंह हमर नो कॉन्फिडेंस मोशन में भाग नहीं परिबे ना नहीं परिबे नहीं कहीं मनमोहन सिंह कोठार थिले राज्यसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन ता कोठी आसे लोकसभा से हमर वोट देई परिबे. मनमोहन सिंह मनी बिल रे वोट देई परिबे ना वोट देई परिबे आमे पढिबा मनी बिल ता केवल लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हुए आ सिंपल मेजॉरिटी रे त वोट देई परिबे. हां फाइनेंस मिनिस्टर हेई परिबे तमे बजट से थिले बजट तमे प्रेजेंटेशन करिवो सबु करिवो किंतु वोट तमे देई परिबे हां देई परिबेनी. ओके सी फाइनेंस मिनिस्टर किंतु बजट बिल ऊपरे सी वोट देई परिबे नहीं बिकॉज़ सी इज फ्रॉम राज्यसभा. ओके तेणु जीए जो हाउस रो सी से हाउस रे हमर कोन करिवो वोट दबो. ही हैज द सी ठिया है कि दीटा हाउस रे कहि परिबे डिस्कशन डिबेट रे भाग नहीं परिबे किंतु वोट ता कोठी देबे जोठी तमे मेंबर सेही हाउस रे वोट. ओके सो एटा गोटे मन रख एवरी मिनिस्टर जो माने रहिले they shall have the right to speak take part in the proceeding of the either house joint sitting of the house any committee of the parliament which may be but he shall be not entitled to vote. तेणु जीए जो हाउस रो से हाउस रे ही वोट दबो किंतु ठिया कि दीटा हाउस रे कहा धर एबे हमर कुहा दिबो जे हमर डिफेंस मिनिस्टर धर हमें कहबा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमें कुह जेतले कहला जे डोनाल्ड ट्रम्प कहले ए जो इंडिया पाकिस्तान भितर जो वार चलीतिला मु ही होची एई वार टाकू समाधान करिछि मो जगु मु फोन करिया जगु मोदी बंद कर दे. तो तापर अपोजिशन वाला कहले ताले मोदी किछि न बापा तो सेठी बसछंती. ओके तापर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आसी कोन कहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहले ये डोनाल्ड ट्रम्प हमें जानी डिसीजन हमर मोदी ही नै छंदी. ओके जहा भी डिसीजन एठी होउची आम देश रे आमे नौजु को एक्सटर्नल पावर हमर इन्फ्लुएंस नहीं गवर्नमेंट ऊपर सी आसी क्लैरिटी देबे बिकॉज़ ही इज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर. तेणु जेतले लोकसभा रे जणे पचारिबो सी राज्यसभा मेंबर किंतु से लोकसभा रे आसी के ठिया के कहबे किंतु वोट देला बेले कोनोसी ऊपर कियो कोडी देबे से राज्यसभा देबे. ओके तापर हमें कहले ऑलरेडी हमें कहितले ए पॉइंट जे हमें कहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट को एडवाइस देबे किंतु प्रेसिडेंट को पाखरे गोटी ही पावर अछि गोटी थरा तांको रिकन्सिडरेशन पई पठै परिबे. तो ए प्रोविजन टा जो रिकन्सिडरेशन पई पठैबा ए प्रोविजन टा केबे ऐड हला मन रखिबो 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे हमरो ऐड हला. ओके जे गोटे थरा ये प्रेसिडेंट कौन करिवे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर डिसीजन को रिकन्सिडरेशन पई पठै परिबे किंतु जदी रिकन्सिडर हे के आसिला सेइडा सेकंड टाइम से अप्रूवल करिया पे बाध्य. जदी स्टेट रो बिल रिकन्सिडर हे के आसिछि गवर्नर गोटे बिल टा रिजर्व करिसंदी प्रेसिडेंट को पाखकू एंड प्रेसिडेंट सेटा रिकन्सिडरेशन पई गवर्नर को थ्रू रे आउट रे स्टेट को पठैले स्टेट रे एटा रिकन्सिडर हे के आसिला तो सेइडा प्रेसिडेंट अप्रूवल करिया पे बाध्य ना बाध्य बाध्य नुहंती. दिस क्वेश्चन भी परीक्षा रे पड़थिला ओपीएससी. ओके स्टेट रो बिल टा जोटा गवर्नर पठै छंती सेटा रिकन्सिडर के आसला पारे प्रेसिडेंट नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट किंतु निजे जोटा पठै छंती सेंटर को तो से बिल टा ही इज बाउंड टू गिव हिज असेंट. बुझी पाला ना बुझी पाला. ओके तो एडा हमें कहले जे 44 अमेंडमेंट एक्ट रे हमें कहले जे गोटे थरा हमरो रिकन्सिडरेशन पई पठै परि. ओके अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर हमें ऑलरेडी कहि दै छे
जे हमर से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करंती अदर काउंसिल मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करंती अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओके किंतु जो माने मिनिस्टर हेबे से माने को भी हाउस रो हे परिबे लोकसभा रो हे परिबे राज्यसभा रो हे परिबे इवन इफ को हाउस रो मेंबर नो से माने भी हे परिबे प्रोवाइडेड दे शुड बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस विद इन सो सेटा सेया लिखा है जे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट while other ministers are appointed by president on the advice of the prime minister. So this means president can only appoint those persons as a minister who are recommended by the prime minister. So usually the member of the parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha, appointed as a minister. A person who is not a member of either house of the parliament can also be appointed as a minister. जो गुड़ा परीक्षा रे पड़ितला जे जदी जणे लोकसभा राज्यसभा मेंबर नुह हेई परिबो कि यस हेई परिबो प्रोवाइडेड but within 6 months he must become a member of either house of the parliament within 6 मास भीतर से हमरा जदी न हले otherwise she is to be minister तांको मिनिस्टर पद चली जे बुझि परलो एडा भी हमें पढितले जे मिनिस्टर who is a member of one house of the parliament can speak take part in the proceeding of the house in other house but कोडी vote देबे but he can vote only in the house of which he is a member okay तेनो सेटा जो हाउस रो से मेंबर से हाउस रे से दे तापरे जेते जण मिनिस्टर हेबे आग शपथ पाठ नेबे शपथ पाठ किए करेबे प्रेसिडेंट करेबे सो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द oath and secrecy the oath of the office जेतले से कहबे हां मु संविधान को मानिबी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करिवि तो जहां ताकर ड्यूटी परफेक्टली करिवि कहा ऊपर राग रखि कि नो कि कहा फेवर रे डिसीजन देबिनी जोडा हमर जो सीक्रेट सब इंफॉर्मेशन रखिबि कहा को रिवील करिबिनी ओके हमें देखो इनसाइड ट्रेडिंग कोन जानछ तमे व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइड ट्रेडिंग नहीं ट्रेडिंग तमे जो शेयर मार्केट जानछ इनसाइड ट्रेडिंग ओके तमे देखो धारा गोटे मु कहिबि जे बे गोटे जागार रेट बिल्कुल नहीं ओके गोटे जागार रेट बिल्कुल नहीं गोटे जागार बिल्कुल रेट नहीं मु किंतु कैबिनेट रे मिनिस्टर अच्छी मु कोन करिवि मु जानि छी जे एई पटे वर्तमान गोटे रिंग रोड देकी जीवो खोर्धा देकी एपटे हमर आठगड़ ए सब देकी जीवो ओके 111 किलोमीटर जो जंगल जो जगार रेट पर माने स्क्वायर फुट जोडा हमर 760 टका थिला जेतेबेले गोटे रिंग रोड गोटे नेशनल हाईवे से पटे जाउची इमीडिएटली तार रेट 5000 हे ओके तमे आजिका डेट रे देखो पटिया रे तमे जागा किनिबो स्क्वायर फुट 6000 टका 6000 माने तमे जदी माने एई घर एत्तीटा तो नुहे स्क्वायर फुट माने कोन जानछ तो गोटे 1 बाय 1 1000 स्क्वायर फुट माने तमरो एमती हितबो एपटे 100 एपटे 10 1000 स्क्वायर फुट हेगला ए घर रो एत्ती की आधा जागा एटा होची 60 लाख से पटिया रे खाली जागा भाबो तमे जानि न तमे किंतु जने मिनिस्टर कहि दो तम भाई कि 15 दिन पर एपटे प्रोजेक्ट आसुची तो सेपटे कोन करिवे राता राती सब जागा किनि की रेडी हे की रहि जबे हम भाबियो एठी कोन मु जाई कि हेठी कोन रहिबे पूरा जंगल भितर से जंगल रो जागा जतेबेले गोटे नेशनल हाईवे पळौची कि किंबा सेठी गोटे एयरपोर्ट आसुची कि किंबा सेठी गोटे पूरा गवर्नमेंट रो प्रोजेक्ट आसुची इमीडिएटली तार रेट बढ़े तो सेटा से इंफॉर्मेशन दबो कि ना जे मिनिस्टर थिबो से जानिबो तेन मिनिस्टर रो किए ना जे क्लोज लोक हेदिबो ओके कि कहि देबो एठी जगह ए जगहडा किनि पकई दे दिमास पर आदि इन्वेस्ट करता 50 लाख 5 कोटी पाइबो मासे पर एडा होची इनसाइड ट्रेडिंग माने आजिका डेट रे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होची इन्फॉर्मेशन ओके इन्फॉर्मेशन कोन चाली जदी सेति कि तमे पाई गलो लोक सेति रे मार बसिबे ओके सो सेति पे हमें कहचे डाटा इन्फॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल बोली हमें कहचे ओके ओके सो हमें एडा में कहले तो किंतु हमरो हमें जो क्वेश्चन पड़ी थला गोटे हमर प्राइम मिनिस्टर अछि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबे देखो
हमर ओडिसा रे दुई जण डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओके सेमिति किछि नाही ओके आउ सेमिति खाली ना को मात्र तो जेतेबेले हमर 1990s रे देवीलाल हमर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे हमर शपथ पाठ कले कहले एटा तो नथिला एटा कोटे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कोन गोटे पद आसिला एटा चैलेंज करा गला सुप्रीम कोर्ट रे हुआ गला जे लोक केस कले कहले प्राइम मिनिस्टर जानिछु डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कोड गोटे आसिले तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहि कि जेतेबेले कहले कॉन्स्टिट्यूशन एटा लेखा नै तमे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कोड कहलो ओके प्रोवाइडेड हमरो केवल प्राइम मिनिस्टर कथा लिखा है मिनिस्टर मान कथा लिखा है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कथा लिखा है the Supreme Court upheld the oath as valid and stated describing a person as deputy prime minister is descriptively only such description does not matter and to confer him माने तांको पे confer him any power of the prime minister खाली ना को तमरा डेजिग्नेशन होची डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किछि पावर नहीं तमे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर माने तमे सिंपल गोटे मिनिस्टर जमिति कि आमे कहूचे यदि अलग मिनिस्टर एबे हमर जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दुई जण अछंदी तांकर पावर आज को हिसाब रे जणे हमर रहउछिन अंगनवाड़ी नुहे से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रो ओके जणे रहिले वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट आउ जणे रहिले कोन एग्रीकल्चर आ एनर्जी मिनिस्टर सो ही इज ए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और एनर्जी इज नॉट ए डेप्यूटी माने चीफ मिनिस्टर कर किछि सेपरेट डिपार्टमेंट ओके किंतु लिखिला बेले हम कोन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लागु जे बोधे मोहन माझी नथिला बेले एही दि जण ही काम करथि सेमति किछि नै ओके so it is ruled that the description of a minister as deputy prime minister or any type of minister such as minister of the state deputy minister of which there are no mention in the constitution आपरे किछि लेखा नै किंतु आर does not हमर कोन ने तांकु किछि ओटे एक्स्ट्रा पावर दिया छि किछि नै does not violate the oath taken him so long as substantive part of the oath is correct okay ता salary allowance हमर जो पार्लियामेंट डिसाइड करबा टाइम टू टाइम ए मिनिस्टर मानकर केते salary allowance तो गोटे मिनिस्टर सैलरी अलाउंस एमपी रो जति सेति की आउ एक्स्ट्रा तांको ट्रैवल अलाउंस मिलुची मेडिकल अलाउंस से सब समस्त थाए किछि अमाउंट हमरो 10-15 हजार 20 हजार एक्स्ट्रा नहल नै प्राय सेम ही थाए तांकर एडिशनली गोटे एक्स्ट्रा हमरो अमाउंट मिले तो ए हिसाब रे हमरो तमे देखि दबो सेंटर रे मिनिस्टर मानको केते कोन दरमा दिया दो ओके मिनिस्टर मानकर दिया केते लिखा है बही रे नुआ नुआ मिनिस्टर मानकर किछि पैसा लिखा है छि फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट वाला आगो तो नथिला ना बीजेपी गवर्नमेंट रो एबे स्टार्ट हेछि एबे जे स्टार्ट हेछि नेक्स्ट ईयर आसीबो सेने से कंटिन्यू करे डिपेंड करे से माने यदि चाहिबे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रखिबानी मु तुमको से दिन कहूली कहीं यार पछरे लॉजिक होची तो सब रीजन को इंपोर्टेंस दबा पाई केही फील करिवेनी कि हमर रीजन को छाड़ी देछन तो देखो एपटे हमर कोन फास्ट रे मानकर रहिला जेहेतु ओडिसा रे पाखापाखी 40% लोक ट्राइबल लोक रहछन तो सेति पई हमें जने ट्राइबल मिनिस्टर करिचे कारण वोट टाइम ट्राइबल पॉकेट को माने ये करिया पाई सेकंड कथा हला हमर जदी केंदुझर हमें देखिबा केंदुझर को पार्ट रे रहउची ईस्टर्न ना वेस्टर्न ने कोन ईस्टर्न पार्ट रे तमे देखुछो ओके तो ईस्टर्न पार्ट रू तो हमें वेस्टर्न पार्ट लोक हमें रागी दिबे को हमको किछि देबे तो तांको हमें कोन कले वेस्टर्न पार्ट रू हमें कनक बदन सिंह देव को वेस्टर्न पार्ट रू जने रहिले एंड डेप्यूटी सीएम कर दे हम तो खाली रखि थान तो काहे कि डेप्यूटी सीएम ना को मात्र किछि नाही खाली माने फ्लेवर गोटे डेजिग्नेशन पाई पुणी देखि देले वेस्टर्न ओडिसा नले कौशल वाला कहबे हमको सेपरेट कर दियो हमें माने जहाँ भी कौशल गोटे सेपरेट स्टेट से डिमांड करुँच वेस्टर्न ओडिशा को से भावुं कि हमको इंपोर्टेंस दौना सबू आम कौन कटिकिया लोक कटक भुवनेश्वर लोक नहीं जाऊँच ओके आम पटक दौना आम कहीं जीवु माने कोर्ट रे लड़िया आम कटक कहीं आसू से डिमांड करुँच कि आम संबलपुर की वेस्टर्न ओडिशा गोटे कोर्ट करा हाई कोर्ट करा ओके से कहते सबू तो एम्स रहा तुम आईआईटी रहा तो सबू तो सही पटे रहिबो से भिड़ी भाड़ी की आईएम्स को नहीं से पड़ो आईआईएम संबलपुर ना नहीं न नहीं से जो माने प्रोफेसर माने भी से खुशी ना कहले किए संबलपुर जाइए रहिबो प्रोफेसर ओके से चाहूले समस्ते जे एठी भुवनेश्वर हे गले सिटी रे रहिबा पिला को साई रे पढ़ेबी मेडिकल फैसिलिटीज भलो कैपिटल रे रहिबी
सी टिके संबलपुर हे गला टिके कुंथ होचंदी कि ना ना संबलपुर पछे एठी आउ गोटे कोठी आइदर फाइदर रे कोन हे जिवे आ संबलपुर के जा ओके तो सेटा हमरो लोक काहे कि ना से जगह को पुणी सेटा हेले तो डेवलपमेंट हबा भुवनेश्वर तो एमती नथिला धीरे धीरे डेवलप हैला समस्त चाहूँ भुवनेश्वर रहा ओके तेणु सेटा तो हबनी आ जदि सब भुवनेश्वर हे जिवो वेस्टर्न ओडिशा वाला माने कहबा हमर काई हमर आईएम नै किछ नै तो सेति पय सेपडे एनआईटी देइछे सेपडे आईआईएम देइछे ओके तो ए भले हमर कोन ना डेवलपमेंट होछि सेति पय हमर हॉकी स्टेडियम टा भी एई पडे कोन कहउथिले जे नै राउरकेला रे करा दिबो सो वर्ल्ड रो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम राउरकेला रे हेछि ना नै तो वेस्टर्न ओडिशा को फोकस करिया पय वेस्टर्न ओडिशा जन चीफ मिनिस्टर रहले डेप्यूटी सीएम रहले ओमेन माने तमे कहबा ईस्टर्न साइड रे आउ कोन केही लोक नथिले प्रभाती परिडा को काहे कि देले प्रभाती परिडा को एथि पय देले कि हमर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रो धर कटक पुरी भुवनेश्वर ए सब एरिया रो तो तांकू जने हमें रखा गला वुमेन हिसाब रे सो वुमेन एम्पावरमेंट हैला रीजन भी हैला वेस्टर्न ओडिशा सेपड़ भी जन रहिला ट्राइबल लोक हैला पूरा सब को एड्रेस करिया पेडा पर करा ओके तेणु मोदी सरकार जतले आसुथंदी सीए देखिबेनी जीए रहउची रहउ ओके रिमोट कंट्रोल टा मो हाथे भाई ओके आमे कहूदिले से दिन किंतु हम भाबुथिले मु इन्फॉर्मेशन पाइथिले कि चीफ सेक्रेटरी आउ जने आज तमे जानि छे जे चीफ सेक्रेटरी अनुगा गेले ओडिसा रा फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी आज के हे नथिले ओके तो हमर एबे कलिंग कर्मयोगी कॉन्क्लेव होतिला तो माने तो समस्त जाइथिले तो सेते भर्तुहरी महताब जे कि एमपी आस्थिले तो से 8 थर एमपी होछंदी लोकसभा ये एंड तमे जानि छे जे ही द सन ऑफ हरे कृष्ण महताब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर करा प्रजातंत्र रो से होछंदी दिल्ली रो हेड तो अनुगार जे कि हमर जो एमएमआर थिला मार्टनल मोर्टालिटी रेट जोटा कि कमे कि केते 37 हमर ओडिसा आनछन से कहले 37 नुह मु जो टारगेट हमर थिला 17 कि 15 भीतर रखिया को सेति की करि पालिन मु देखो गोटे जो 87 86 रु 37 सेने गोटे ग्रेट अचीवमेंट ओके तो एग्जांपल तांकर दउथिले अनुगार तांकर दउथिले जो अनुगार के बे हमर आईएएस रो चीफ सेक्रेटरी हमर ओके सो तेणु तमे माने जतले पोस्टिंग हबो तो डेफिनेटली कोन होची से भले की रेस्पोंसिबल पोजीशन ने हमर रहिबो ओके एंड तेणु डिसीजन मेकर हिसाब रे तमे भाबो एबे ओडिसा रे जहा डिसीजन हबो बडे की डिसीजन मेकर हिसाब रे से सब डिसीजन उडा करनबे ओके सो एई थरे तमर होची जे ओडे सैलरी अलाउंस जो रहूची तडा पार्लियामेंट डिसाइड करिवो एंड से माने को किछि एक्स्ट्रा सैलरी अलाउंस हमर दिया जाउची जो माने मिनिस्टर माने रहले तो हमरा कोन देन हमें रहिले रेस्पोंसिबिलिटीज ऑफ द मिनिस्टर हमें कहले गोटे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कोन हमें देखुचे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट इज प्रिंसिपल कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी माने एठी क्लियरली कहा जायछि जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल टू लोकसभा remember this man council of minister responsible to lok sabha only that means all the minister own joint responsible to lok sabha for their act of omission and commission they swim and sing together jodi बंचिबे तो समस्ते जदि बुड़ीबे तो समस्ते दे स्विम और सिंग टुगेदर जदि समस्ते पहरी की क्लियर करी की नदी पार हेबे तो समस्ते अदरवाइज जदि बुड़ी जिवे समस्ते बुड़ी जिवे ओके सो व्हेन केते बेले से बुड़ीबे ना व्हेन लोकसभा पास ए नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा टा केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन ए लोकसभा पास हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल द मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इंक्लूडिंग द मिनिस्टर हु आर फ्रॉम राज्यसभा राज्यसभा रे जो माने थिबे से माने भी रिजाइन कर ओके सो एटा तमरा so alternatively council of minister can advise the president to dissolve the lok sabha on the ground the house does not represent the views of electorate okay tenu eita ode mane rakhi thao तो president jame कहूचे council of minister responsible to lok sabha only and council of minister hold the pleasure of the president जेतेबेले चाहिले बाहर करि परिबेनी president सेतेबेले बाहर करिवे जेतेबेले they lost the majority in the lok sabha okay lok sabha रे यदि मेजॉरिटी पळेला and they lose the confidence of the house तो तांको अगेंस्ट रे गोटे नो कॉन्फिडेंस मोशन आसे लोक सभा रे सेडा यदि पास हे गला ताल गवर्नमेंट तमर मोदी को अगेंस्ट बे नो कॉन्फिडेंस मोशन आसला तमे जानछ ना नै
मोदी का अगेंस्ट आसला कि मोदी क्लियर कट तो आमर प्रूफ देखे देले कि मोर मेजोरिटी अच्छी तेणु तेणु मोदी जिते 300 सीट थिला भी आमर नो कॉन्फिडेंस मोशन आसीला कौन भाई ना लोक मैंने जानतु जे आम जानी आम हारू किंतु फिर भी आम कौन एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट हिसाब रे माने नो कॉन्फिडेंस मोशन आम पढ़ा कौ समय नो कॉन्फिडेंस मोशन जदि लोकसभा 50 जन लिखिकी देदेले नो कॉन्फिडेंस मोशन तो डिस्कशन डिबेट हम पास हम से जानी आम फेल हबू किनु गोटे डिस्कशन डिबेट लोक देश जानतु जे आम नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी किंतु नो कॉन्फिडेंस मोशन रे जदि तुम नेक टू नेक फाइट से केस रे हारी जबार भी चांसेस अच्छी जमती कि आम कहले वाजपेयी समय तुम 90s रु 2000 भितर तुम गवर्नमेंट एमती बसे चले भांगे बसे दिवस चली के भांगे जोटा को आम कहे तुम म्यूजिक चेयर जो आम ना बॉल जा पाखे सी आउट तो से म्यूजिकल चेयर भाया गवर्नमेंट चली कहार बर्थडे अटल बिहारी वाजपेयी हाँ आज अटल बिहारी वाजपेयी बर्थडे गुड गवर्नेंस डे आज ओके आमर डिसेम्बर 25 तारीख हूँ गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी माने जेनेरेशन रे एमती लोक माने जिते प्राइम मिनिस्टर अच्छा वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर होती अटल बिहारी वाजपेयी जी कि पावर उपरे जाइए सब डिसीजन नि ओके आंकर माने जो कहते ना समस्ते लागती आग पार्टी आग सीट आग तापर जाइए देश से गोटे लोक देश आग पार्टी आउ पावर पर ओके गोटा गोटा जॉइंट सेटिंग कहूँ ओके एटा आम पढ़ा माने जिते बड़े आम कहूचे जे गोटे बिल आम यहाँ पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा मुझे कहीदे गोटे बिलटा आम लोकसभा पास हुए लोकसभा ऑर्डिनरी बिल कथा कहूचे जॉइंट सिटिंग केवल ऑर्डिनरी बिल केस रे हो एंड जिते गोटे बिलटा लोकसभा पास हम लोकसभा पास है राज्यसभा को जीव राज्यसभा पास हम राज्यसभा पास है प्रेसिडेंट का अप्रूवाल पर बिलटा एक्ट हुए कि तुम एमती सिचुएसन भाव गोटे बिलटा लोकसभा पास होती राज्यसभा पेंडिंग होने कौन ना अनलिमिटेड पर्यंत जो पेंडिंग होती बिलटा पास हो पारे तो ये केस रे कौन करा जे प्रेसिडेंट गोटे जॉइंट सिटिंग डाके कहीं बिलटा पेंडिंग होती तो जॉइंट सिटिंग माने कौन लोकसभा और राज्यसभा दी जन को डाक तो दी जन गोटे गोटे आमर माने पार्लियामेंट रे 3टा हाउस अच्छे गोटे लोकसभा गोटे राज्यसभा आ गोटे सेंट्रल हॉल समस्ते बसवे सबुतक लोक बसवे 788 जन जो लोक अच्छा टोटाल इलेक्टेड मेंबर बसवे तापर से बिलटा तो से बिलटा सिंपल मेजोरिटी से बिलटा को आम जॉइंट सिटिंग टाको प्रेसिडेंट डाक अंडर आर्टिकल 108 रे ओके एंड स्पीकर से प्रिसाइडेड करेंगे से जॉइंट सिटिंग तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो ये जॉइंट सिटिंग टा आमर जो बसब तो सेटा सिंपल मेजोरिटी तुम जेहेतु तुम देख एबे बीजेपी अच्छी 300 प्लस 330 प्लस आमर लोकसभा बीजेपी मैंने सब मिसामिशी करके राज्यसभा अच्छी पाखापाखि 130 पाखापाखि अच्छी तो टोटाल 460 तो जदि 793 800 जाक 700 आमर कहले 88 तार अधारू अधिक ना 390 तेणु आंकर 460 है तेणु जदि गोटे बिलटा ऑर्डिनरी बिलटा सेमिति पास न हो पारे जॉइंट सिंह डाकिदेले इजिली पास कर कारण नंबर 400 प्लस 450 मुझे कहूँ तो इजिली ये पास कर सो जॉइंट सिटिंग टा जिते गोटे डेडलॉक हो जाए रिलेटेड टू गोटे ऑर्डिनरी बिलटा तो ताकू आमर कौन जॉइंट सिटिंग कर जदि से रिजेक्ट हो गला तो रिजेक्ट हो जदि पेंडिंग हो अच्छी आमर जॉइंट सिटिंग डेप्यूटी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर अच्छी ओके आउ गोटे कथा मन रखी वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तमें जिते बड़े गोटे कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर तमर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थाई पारे नरेंद्र मोदी को मिनिस्टर में भी पसंद कर नथिबे किसी लोक थिबे जे कि तांकर व्यू को अपोज करुथिबे ओके तमें कहबो नितिन गडकरी एबे कहि दैछंदी गोटे स्टेटमेंट जे दिल्ली रे एते पॉल्यूशन होउची हमर मु दिन रहिली जे मोर इन्फेक्शन हे गला निजे कहले तेणु आम आदमी पार्टी वाला इमाने कहउछंदी जे 10 वर्ष आम आदमी पार्टी थिला से माने पॉल्यूशन करी पळैछन
आमे कंट्रोल करि पन एबे बीजेपी गवर्नमेंट कोन को पार्टी कहार एबे हमर जो दिल्ली रे बीजेपी रो रेखा गुप्ता अछन हमर चीफ मिनिस्टर से वर्षेला हे गले जहा पॉल्यूशन कहले से कहले अरविंद केजरीवाल को पचारो से तो 10 वर्ष थिले किछि कमे पाइलेनी मुई वर्षेला अछि केमति कमे ये सेठी ये जतले कहले कि दिल्ली रे एते पॉल्यूशन आउ इन्फेक्शन हे जाउची आउ एथि पे रिस्पांसिबल मो निज मिनिस्टर माने मिनिस्ट्री गाड़ी वेहिकुलर एमिशन रो 40% एमिशन हमर वेहिकुलर एमिशन जहा को देखिबो कार रे ना नहीं तमे जदि 40 जन लोक 40 टा कार धरि के आसीबे केते पॉल्यूशन अब से 40 टा लोक जदि बस रे बसी के आस्थान केते पॉल्यूशन कमी जाई थाने वेहिकुलर एमिशन रो मैक्सिमम हमर होत तमे दिल्ली जदि जीवा एबे देखु सबले सबुठो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इंडिया रे होची दिल्ली माने सकाळ तुमको रास्ता देखा जी एते माने पॉल्यूशन होई ओके तेनु एयर क्वालिटी इंडेक्स रे सबुठो लोएस्ट होची दिल्ली एबे जदि बंचिबार तमर अछि 80 वर्ष हेडा 78 हे जी 2 वर्ष कम दिल्ली जदि रहउछ ओके त एई बळे आमे कहूचे त से जो कहला पारे तांको समस्त घेरी गले कहले तम मिनिस्टर तो कहउचंदी दिल्ली पॉल्यूशन आ तमे तांको गवर्नमेंट रो वेहिकुलर एमिशन से किछि करि परनांती समस्त उल्टी तेनु कोन किछि तमे कोडी गोटे स्टेटमेंट कहि देलो सेईटा को अपोजिशन वाला मीडिया को हाईलाइट करिकी होला करबा स्टार्ट करे तेनु तमे जत्ते हाईलाइट ऊपर को जत्ते जीव मने रख तमे बेसी कहिबो कथा वार्ता कम कारण तमे कोडी कोन गोटे कहि देलो सेटा को इश्यू करिकी हमर कहिबो तमे देखो जत्ते बड़ बड़ पोस्ट रे हमर अछंती सेदिना हमर आस्तिले संजीव पंडा सर आस्तिले जे कमिश्नर पुलिस थिले और एबे अछंती एडिशनल डायरेक्टर जनरल नक्सल लय जातले तमे स्टेटमेंट की कहा कोडी तमे देखो वार्ड रे से खाली कथा होतो हम पचरे कि सर एडा एमती हितला सेडा एमती हितला ठीक है तमे कोडी देखो जो हायर अथॉरिटी रो स्टेटमेंट कि कहबे कि सब जानि थिबे कोन केस द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सो we'll definitely let you know after some the investigation is complete माने ओपन स्टेटमेंट देके छाड़ दे हमकु लागिबो सब कोन किछि कहिना किछि गोटे कथा तांगा पाटिर बाहर कर पे तनु तमे जत्ते हाई पोजीशन को जिवो एमिति किछि लूज स्टेटमेंट दबनी जोटा कि पारे हम पे काळ हो सब बेले जत्ते देखिबो जत्ते हाई पोस्ट रे थिबो ट्राई करिवो छोटो माने स्टेटमेंट रे कहया पई and normal statement सबु जानि दिबो कोन हे जे भितरे सबु जानि छ केस कोन investigation is going will definitely it will come after the investigation is come now like the court case the court is in case so judiciary will take the action so we should not take comment on the judiciary salla सेतिके गोटे दीटा पॉइंट रे तमरो सॉरी तमरा दिल्ली तमरो रथ यात्रा रे दळा चकड़ा हे कि 3 जण लोकंकर डेथ हे गला एते माने ता पई कैमरा लागि जी माने केते कोटी टंगार कैमरा लागिथिला कोन करूथिले कुआडे पुलिस जाइथिला हम पचारले तळे कमिश्नर ताबरे कहले हम रिपोर्ट पई हम कोन पई हेला वी आर इन्वेस्टिगेटिंग हला ता परे वर्षे परे तमरो माने 6 मास परे रिपोर्ट देले तो रिपोर्ट रे आसिला कि दिस इज माने पुलिस रा हमरो होची प्रॉब्लम किछि ये कहि पन पुलिस तमरा कोन करूथिले पुलिस एतरा केते आईएएस ऑफिसर केते जण आईपीएस ऑफिसर रे इन्वॉल्व हेथिले कोन पई तो सबु बेले तमरा सेही मोमेंट 6 मास पर आ कोन से घटना थिबो ओके से घटना थिबो कि आउ तो सेति पई तमरा देखो जो बालेश्वर रो जो केस हैला जने झियो निजुकु पेट्रोल पकई जाळे दिया गला हमरे कोन ना इमीडिएटली कहले कि हम ओटे कमिटी बसौछु आ ऊपरे इमीडिएटली कोन हो निजे किछि करबेनी जो तमर तो ट्विटर तो समस्त को दिया जाइथिला हमरा एजुकेशन मिनिस्टर को सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर समस्त किंतु कोन माने सस्पेंड हेले प्रिंसिपल ओके प्रिंसिपल खाली सुनिलेनी आउ तम माने कोन करथो सुनि देथिलो तेनु सेथिबे कोन ना इमीडिएटली रागटा को कम करिया पे तमे कोन करिवो जणे जण को सस्पेंड कर दबो एंड तापरे कोन करिवो ना तमे कहबो इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग चलो हाँ डिसमिस और सस्पेंड तुमको टेम्पररी बसई दि जाए हाँ तुम तुम चाकरी जाइनी तुम घरे बर्तमान तुमको कहला जे पैसा नियो घरे खाई पी बस ओके हाँ हबनी नुहे किए कहला हबनी सब किसी हम तुम जदि मोर खास लोक हो चीफ मिनिस्टर
आ तुम मोर खास लोक तुमको मु उत्कल यूनिवर्सिटी भिसी भी करे देबी ओके तो आज का डेट रे सब एवरीथिंग चलुची ओनली हु आर क्लोज टू द पावर पावर को तमे क्लोज की तमरो हाथ अच्छी कि आम थर्ड महला जो कहूचे थर्ड फ्लोर रे तमरो हाथ अच्छी कि तमे थर्ड महला तमे जानि परछ ना नहीं कौन लोकसभा रे हमरे जो विधानसभा तमे जाउछ लोकसभा सदन सदन रे जेतक मिनिस्टर बसुछंती थर्ड फ्लोर रे फर्स्ट फ्लोर रे हमरो गोटे डिपार्टमेंट सेकंड सबु तंक मिनिस्टर मानकर ऑफिस होउची हमरो चीफ मिनिस्टर ऑफिस हमरो अलग हमरो एजुकेशन सबु मिनिस्टर माने को महला रे बसछंती तृतीय महला रे बसछंती तेनु तमे कहबो तार हाथ तृतीय महला रे अछि तो कहना थर्ड जो थर्ड फ्लोर रे तार मीनिंग होची या मिनिस्टर मानकर मुख ओके सो एथिरे हमें कोन कहले कोटे कथा हला द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी आल्सो मीन्स कैबिनेट रे जहा डिसीजन हबो सेइडा समस्ते तमे मते लाइक करो और न करो मु प्राइम मिनिस्टर माने कैबिनेट रे जहा डिसीजन हे गला एवरीवन शुड बाइंडिंग दैट डिसीजन तमे केही से डिसीजन अगेंस्ट जाई परिबनी कहबनी जदी कहलो रिजाइन करो तुमको यदि भल लागुनी कैबिनेट रे रहया पई काउंसिल मिनिस्टर यू कैन नॉट कारण सेति पे हमें समस्त यूनाइटेड हे कि हमें गोटे मिनिस्टर तेनु सेठी डिस्कशन डिबेट फाइट हबो नहीं मु एथरे एकमत नुह ये नुहे तमे ए जो बिल आनुछ मु एथरे सहमत नुह तमरो मे बी एबे नीतीश कुमार अछंती मे बी हमरो जो चंद्रबाबू नायडू अछन नाका मिनिस्टर से माने कहबे नहीं बिल हमें तो तमे कोन करो फाइट करो डिस्कशन डिबेट हो किंतु गोटे डिसीजन हेई गला that should be binding on all ministers समस्ते सेटा मानिया को बाध्य जदी तमर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होची रिजाइन ओके डॉक्टर बी आर अंबेडकर रिजाइन कर ओके सो एथिरे कोन ना डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर इवन इफ दे डिफर द कैबिनेट मीटिंग रे तंग डिसीजन को समस्त सेटा मानिया को बाध्य इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय द कैबिनेट डिसीजन सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट गोटे थर डिसीजन हेई गला सेइडा को तमे माने तम कैबिनेट रे भितर हो बाहर हो तमे मानिया पे बाध्य इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विथ द कैबिनेट डिसीजन इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट तो सी कोन करिवे मस्ट रिजाइन so several ministers have resigned in the past showing their difference with the cabinet for example जेतले बी आर अंबेडकर रिजाइन करितले because of his difference with his colleague on hindu code bill ओके हिंदू कोड बिल रे हमरो से कहले नहीं एटा ठीक न मु रिजाइन कर सेकंड सीडी देशमुख डिफरेंस इन द पॉलिसी ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट को नहीं कि हमरो तेनु जेतेबेले तमरा लागुती ना एटा ठीक लागुनी मते हमर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजाइन कर ओके तो बी आर अंबेडकर एमती रिजाइन कर देती ओके बुझी पालो ठीक अच्छे हमें नेक्स्ट क्लास रे आइटा पढ़िबा एंड पार्लियामेंट चैप्टर हमें डिस्कशन करिया सो बुझी पारलो मेजर जिंस इथरे हम कहि देछि आ जहा टिके टिके अछि नेक्स्ट क्लास रे हमें पार्लियामेंट चैप्टर डिस्कशन करिबा ओके वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर इज गोइंग टू माने डिस्कस केबे के मिस करनी पार्लियामेंट चैप्टर रु सब मैक्सिमम क्वेश्चन आसे प्रथम रु जो गुडा को हमें वर्तमान जाय पढ़ी लेनी 12टा क्वेश्चन सेथु पढ़िबो जति बर्तन अधा पढ़ी देलेनी हमर पॉलिटी रो मेजर जिंस तो आउ अधा अछि अधा जोडा परीक्षा रे अधा क्वेश्चन पढ़ियो 25 टा 12टा ए पर्यंत जति पढ़ी लेनी 12टा क्वेश्चन ओके कोडा कोडा पेंडिंग अछि ना अप्रूवल हे माने धर माने जदी लोकसभा भांगी गला पेंडिंग अछि पेंडिंग नै पेंडिंग अछि तो सेइडा कहल ना प्रेसिडेंट सेटा जदी अप्रूवल कर देले बिल हे गला प्रेसिडेंट सेटा जदी विथहोल्ड करी के गले अनलिमिटेड टाइम पर्यंत तो सेटा तो रिजेक्ट हे गला ना तो प्रेसिडेंट तो केते दिन पे करि परिबे हां सेटा हमर कोन करले ना प्रेसिडेंट जो पर्यंत अछंती
सेही पर्यंत भितर जदि नहला त लैप्स हिजबो ना जदि से देई देले सर हम्म सर करेंट अफेयर जो पीडीएफ गुड़ा मंथली मैगजीन गुड़ा से गुड़ा ग्रुप रे टिके दे देबे कि सर हो ठीक अछि